अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है यासिर और आज मैं तुर्किया के एक ऐसे क्लिनिक में मौजूद हूँ जो आपको दोबारा जवान बना सकते हैं। जब आपकी उम्र बढ़ती है तो आपके चेहरे पर कुछ रिंकल्स और लाइनें आना शुरू हो जाती हैं, लेकिन यहाँ के टर्किश डॉक्टर्स के पास कुछ ऐसे मॉडर्न तरीके हैं जो आपको दोबारा जवान बना सकते हैं, इन लाइन्स को खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा भी ये लोग काफी काम करते हैं, जैसे नोज थेरेपी। कुछ लोगों को अपनी नोज पसंद नहीं होती या कोई मेडिकल मसला होता है जिसकी वजह से उनकी नोज की सर्जरी करना या उसकी नोज के ऊपर काम करना जरूरी होता है। तो अमेरिका, कनाडा, दुनिया भर से लोग तुर्की में स्पेशली आते हैं अपनी नोज को ठीक कराने या फेशियल एस्थेटिक का काम कराने। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर हयाती। थैंक यू फॉर हैविंग अस फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू फॉर योर विजिट। थैंक यू। या हैप्पी टू बी हियर। तो आज हम इन्हीं के क्लिनिक में मौजूद हैं। हम इनसे काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे कि ये जो फेशियल का जो काम है लोग करवाने आते हैं, ये सिर्फ अपीयरेंस के लिए होता है या इसका मेडिकली भी कोई बेनिफिट है, इसके क्या प्राइजेस हो सकते हैं और कितना टाइम लगता है और इसका कोई साइड इफेक्ट है या नहीं है। So we will interview you today. Are you ready? Yes, I'm ready. So first of all, Dr. Hayati, which kind of services generally you are giving to your patients? I'm otolaryngologist specialist. In my clinic, I treat septal deviations, nasal breathing problems, sinusitis problems. Also, I have another specialty for aesthetics, for facial aesthetics. Mostly, I perform rhinoplasties, revision rhinoplasties, mini surgical things, dimpleplasties, and also some medical things like fillers, botox, and etc. Let me explain them a little bit. So, इन्होंने अभी हमें काफी सारी चीजें बताई हैं। बहुत सारे आपके मसले हो सकते हैं, जैसे आपकी नोज के अंदर जो है कोई मसला है या इसी तरह फेस के अंदर कोई मसला हो सकता है, तो उसको ये लोग ट्रीट करते हैं। लेकिन काफी सारे लोग इनके पास ऐसे भी आते हैं जो अपीयरेंस को चेंज करवाना चाहते हैं, यानी कोई कहता है मेरे डिंपल्स डाल दो, कोई कहता है मेरी जो थोड़ी है या चिन है उसको थोड़ा बहुत चेंज कर दो। तो इनसे इस मामले में पूछते हैं, मोस्टली पीपल कम टू यू फॉर ऑल्सो चेंजिंग देयर अपीयरेंसेस, राइट? Yes, mostly they come for this, and sometimes they come for breathing issues from nose. When we investigate real problem, mostly they come for the aesthetic. Because I think Turkey is famous for this thing. Yes, you're right. Why people love coming to Turkey for doing facial aesthetics and this kind of treatments? Maybe 10 years ago, they were coming for just prices. Prices were really low in Turkey. Affordable. Yeah, affordable. But maybe I think for 3 years, 4 years, the surgeons in Turkey are really doing these jobs very good. So I think the most reason they are coming here, success of the surgeons, and the second reason, the prices. So खास तौर पर जो पेशेंट्स इनके पास आते हैं वो यूरोप से आते हैं, कनाडा और अमेरिका से आते हैं, बिकॉज यहाँ पर एक बेनिफिट ये है कि प्राइसेस एफिशिएंट है, लाइक अफोर्डेबल है। और दूसरी चीज जो डॉक्टर साहब ने हमें बताई कि 3-4 सालों से जो यहाँ के डॉक्टर्स हैं वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं इस फील्ड में। यहाँ के टर्किश डॉक्टर्स बहुत ही फेमस है और अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस डॉक्टर के पास बैठे हुए हैं ये भी बहुत मशहूर हैं। फ्रॉम हाउ मेनी इयर्स यू आर डूइंग दिस वर्क? For 12 years. 12 years, माशाल्लाह। एंड आई थिंक फ्रॉम लास्ट 3-4 years you are also very famous. Yeah, thank you. आपको अक्सर इस्तांबुल की गलियों में कुछ ऐसे टूरिस्ट मिलेंगे जिनकी नाक के ऊपर टेप लगा होता है, तो मेनली उनका रीजन यहाँ पर आने का यही होता है कि वो साथ साथ अपनी नोज की सर्जरी भी करा लें। लाइक टूरिस्ट दे आर कमिंग फॉर एंजॉयमेंट एंड द सेम टाइम दे आर ऑल्सो गेटिंग नोज सर्जरी। Yeah. So is it so simple? Like how many days it can take the surgery? Actually, Istanbul is a very useful city for this. My patients coming from another countries for especially rhinoplasty, we do their operations and we suggest them 2 days rest. After 2 days, they are going around, they are visiting Sultanahmet, Eminönü and Hagia Sophia, and it's very easy because the piezo is in our surgery now. Piezo is some kind of device. It sends ultrasonic waves, and ultrasonic waves can reshape and cut the bone. Wow. So we don't hammer. We just put the device and tup. So the damage is low and the recovery is very good. पुराने वक्तों में ये जो है ना वो चैनी हथौड़ा लेके आपकी नोज सीधी करते थे, लेकिन because now we are in the modern world, so they have laser technique, ultrasonic kind of like rays come to your nose, automatically the machine makes up your nose. तो मैं आपको नोज वगैरह की चीजें बता रहा हूँ, बाकी भी इनके पास काफी ट्रीटमेंट्स है। फिलहाल मैं यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट नहीं कराने आया हूँ बिकॉज ये तुर्की का एक बहुत ही फेमस फील्ड है, तो मैंने सोचा इसकी इन्फॉर्मेशन लेकर आपके साथ भी शेयर की जाए। अगर आप में से भी कोई ऐसा है जिसको नोज का मसला है या फेस के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पर ट्रीटमेंट करवा सकता है, बिकॉज दीज आर रिलायबल पीपल। वन क्वेश्चन आई हैव हियर, फॉर एग्जाम्पल सम पेशेंट केम टू यू फॉर नोज ट्रीटमेंट एंड आफ्टर 1 week he or she finds out my nose is not good, like doctor destroyed my nose, then what do
you do? Let me explain. Yes, In please. our rhinoplasty books, it says that if the surgeon do perfect surgery, if the patient recover himself or herself very good, the risk rate of this surgery 15%. Because of the healing, sometimes some problems can occur, cartilage problems, some kind of infections, etc. In my clinic, I did over than 3,000 surgeries, so we succeed to reduce that risk like 5%. 5%, some problem can occur. If some problem occurs, we stand with our patients. We do our revision operations without taking any money. डॉक्टर साहब हमें यही बता रहे थे, इन्होंने तकरीबन कोई 3,000 से ज्यादा के ऑपरेशन यहाँ पर कर चुके हैं, स्पेशली जो नोज के ऑपरेशन हैं। रिस्क होता है कि बाद में थोड़ा बहुत नोज का मसला बन गया, जैसी आप नोज चाह रहे हैं वैसी शायद ना बन पाए, कोई थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाए, लाइक तो ये दे स्टैंड विद द पेशेंट के पेशेंट दोबारा इनके पास आए फ्री ऑफ चार्जेस, ये उसको जो है दोबारा चेकअप करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह देयर पेशेंट्स आर सेटिस्फाइड विद हिज सर्विसेज। We are not the clinic, do the operation and run away. No. Yes. We understand. They have a proper clinic here, they have an address, they are always standing with the patient. Of course. By the way, people come here to look younger, right? Yes, younger and more beautiful. So यहाँ पर आकर आप जो है दोबारा अपनी उम्र कम करा सकते हैं. Like normally you use injections in the face, right? Yes. Is there any side effects in this? If you use the good medicine, Yes. The side effects are really, really low. And if you know the good technique, the side effects are very, very low. We use always the original things, original botulinum toxin, original fillers. So our complication rates are low in this clinic. तो इनके पास एक स्पेशल ट्रीटमेंट होती है जिसके जरिए से वो रिंकल्स खत्म हो जाते हैं, तो आपका फेस फिर बेबी फेस लगना शुरू हो जाता है. ऑब्वियसली ये कह रहे थे कि इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्वालिटी वाला अगर मटेरियल इस्तेमाल कर रहा है, प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसका जो साइड इफेक्ट है वो कम होगा. टेक्निक भी बहुत जरूरी है. तो अल्हम्दुलिल्लाह इनको तो 12 साल का एक्सपीरियंस है, इसलिए इनके पेशेंट्स इनसे ज्यादा खुश है, बिकॉज साल भर साल एक्सपीरियंस के साथ आप अपने काम में ज्यादा माहिर होते जाते हैं. If you don't use the original thing, the health-threatening side effects can come to you. But if you use original things, the Botox side effects are, the most common side effects are some wrinkles can still occur when we need to do extra dose. And sometimes I can look like this maybe for 20 days to 1 month. But the percentage of that side effects may be lower than 1%. अगर कोई डॉक्टर अच्छा माल इस्तेमाल नहीं कर रहा तो फेस के ऊपर ही आपको उसकी अपीयरेंस नजर आना शुरू हो जाती है कि रिंकल्स भी खत्म नहीं होंगे, दोबारा से उनको तो जो है ना एक डोज इस्तेमाल करनी पड़ती है, आपकी आंखों के ऊपर थोड़ा सूजन हो जाती है. And all are temporary, not permanent side effects. Yes, all of them are temporary side effects. So it's good we have professional doctor here, like somebody who is planning to do this kind of things. He or she can have an idea before coming. Also, people come for making jaws, right? Yeah, and jaw lines. Jaw lines, removing wrinkles, making their chin bigger or smaller. With filler, we do that kind of things. Botox erases the wrinkles. Shaping with the filler. Maybe we can do jaw lines, we can do chin fillers, nose fillers. Some patients are afraid of doing operation. Yes. And the fillers, for the lots of the patients, the fillers is another option. Yeah. यहाँ के डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो फिलर्स के जरिए आपके फेस के अंदर डालते हैं और आपके फेस को शेप करने की कोशिश करते हैं. But for example, if I come to you for making a jaw line and now you put some filler, how many months or how many years it will stay as it is? Approximately 10 to 12 months for fillers. Yes. For Botox, approximately 4 to 6 months. What is the difference between Botox and filler? Because Botox is some kind of medicine, some kind of toxin. It affects your muscles, it makes your muscles weaker and the wrinkles go. Filler, some kind of doldurucu bir şey. The filling thing. To make it bigger or smaller to shape up. And going out, it's going out periods, it takes for one year. So यहाँ पर दो चीजें हैं, एक है बोटॉक्स, एक है फिलर. बोटॉक्स एक स्पेशल काइंड की डोज है जहां पर डालते हैं फेस के अंदर, वहां से मसल्स थोड़ा वीक हो जाता है, यानी वो मसल के साथ ऐसा उसका रिएक्शन होता है कि वहां के रिंकल्स खत्म होना शुरू हो जाते हैं. और दूसरा जो फिलर है वो जहां पर ये डालते हैं वो एक किस्म का एक एक्स्ट्रा गूदा सा होता है, लिक्विड सा होता है, वो डालकर आपके वहां से शेप अप कर देते हैं. तो एक दफा जब आप फिलर करा लेते हैं, इट गोज अप टू 12 months. Yeah, and after 12 months you need another repeat. For example, if I come to you, I say, yeah, doctor, my jawline is not so good, so let's make up the jawline, and you will do it with the filler, right? Yeah. How much it can cost, like how much I can spend on this kind of treatment? For prices, it changes according to the patient's face, because your face is not big, so I need to use less filler. If the patient's face very big, so I need to use more filler maybe. So it changes approximately $1,000 to $2,000 maybe. For 12 months, like for jawline, for jawline, यानी सिर्फ और सिर्फ अगर आप जॉ लाइन का काम कराते हैं तो इसकी प्राइस $1,000 से $2,000 के
के दरमियान हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन योर साइज ऑफ योर फेस, बट दिस फेस कैन बिकम टॉम क्रूज, राइट? For jawline, we use very much filler. Most expensive thing in jawline in filler world. Yeah. What else do you do for the face appearance? Maybe I can do nose filler. We use very little doses for nose filler. Maybe it's priced like $300. Maybe for the under eye light filler, I use very little filler, so it's the same price. But jawline, we use very much filler, so most expensive thing is jawline in this world. Yeah, यानी वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो आप जो लाइन आपकी बनवाने आते हैं ना लोग, उसके अंदर ज्यादा फिलर इस्तेमाल होता है, इसलिए उसका खर्चा भी ज्यादा है. You don't need jawline. Thank you very much. Eye bags. Some people have eye bags and they want to use some filler. It's less expensive. If the eye bags are small, we can erase them with the filler. But if big eye bags, we need to do surgery to take them out. Yeah. 10-15 minutes of treatment. Yes, almost. ये जो काम पूरा आप देख रहे हैं ना, मिसाल के तौर पर आप जो लाइन बनवाने आते हैं तो या फिर अपनी आंख की आई बैग्स ठीक करवाने आते हैं, ये बहुत लंबा टाइम नहीं होता है ट्रीटमेंट का. 10 से 15 मिनट में वो आराम से आपको देख के ट्रीटमेंट करके आपको फ्री भी कर देते हैं. और एक और चीज मैंने देखी है, यहाँ पर कुछ लोगों के जो ये चीक्स हैं ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो ये इस तरह के डॉक्टर्स के पास आते हैं ये लोग कि अपने चीक्स को थोड़ा कम करा लें या डिंपल्स डाल लें उसके अंदर, तो इनसे पूछते हैं. तो डॉक्टर, सम पीपल कम्स टू यू फॉर हैविंग डिंपल्स एंड लेस चीक्स, राइट? Yes, some patients wants dimples and we can do dimpleplasty. It's a permanent procedure. And for this we do bichectomy. Bichectomy means that from the mouth we do 1 centimeter incision and we take out the fat bags from the inside of the mouth and it looks like more sharp face. यानी वो उसके अंदर भी एक छोटा सा ये लोग एक ट्रीटमेंट करते हैं, जिनके मुंह बहुत बड़े बड़े होते हैं, यानी चीक्स वगैरह बहुत बड़े होते हैं, तो उसके अंदर एक्स्ट्रा फैट ये निकाल लेते हैं, आपके फेस की शेप ज्यादा अच्छी हो जाती है. तो इस तरह के काफी लोग काम करवाने आते रहते हैं यहाँ पर, और ये तुर्किया में ये चीजें बहुत फेमस हैं. डॉक्टर, दिस थिंग्स व्हिच यू आर डूइंग टू द पेशेंट, लाइक यू आर कटिंग द स्किन एंड फैट्स गोइंग आउट, इज इट पेनफुल? Not painful, and we are not cutting the skin. We cut from inside of the mouth, so there will be no scar, and they can see the results immediately. Maybe at the same day they can see the results, but the final result will come to them in 3 months. In few months. Oh, very nice. So your work starts from the head until the throat. It starts from here and up. And up. Not eye, not brain, but the other everything. This one, the upper eye, we can do blepharoplasties, upper blepharoplasties, lower blepharoplasties. But I mean the white thing, the eye. Inside. We don't. यानी डॉक्टर साहब हमें ये बता रहे हैं ये वाले हिस्से से ऊपर तक का जितना हिस्सा है उसके अंदर हम लोग जो है काम शाम करते हैं. जैसे आपको साइनसिस का मसला हो सकता है, टोन्सिस का मसला होता है लोगों को, इसके अलावा लेकिन आपके ब्रेन को नहीं खोलेंगे ये, और आपकी आंखों को भी नहीं खोलेंगे. अदरवाइज दे विल टेक केयर ऑफ योर ऑल अपीयरेंस फ्रॉम हियर टू हियर. एंड ऑल्सो आई सी ही हैज माशाल्लाह too many certificates, so he is like licensed guy for making people younger. They are not the old. They have I new have, one. Yeah. I have the extra things in my home. He doesn't have place to put new ones. And one more thing, when somebody come here for these small surgeries, they don't need to stay in the hospital, right? If we do rhinoplasty, I suggest them to 1 week hospitalization because I'm obsessive doctor. I always want to follow my patients very close. And after 1 day, they can discharge to their hotels, their homes. They can go around, walk around in Istanbul, and after 1 week, we send them to their countries. Yeah, very nice. यानी बाकी बोटॉक्स वगैरह, फिलिंग्स वगैरह में इतना मसला नहीं होता, 5-10 मिनट की ट्रीटमेंट होती है. बट स्पेशली अगर रीनोथेरेपी जो होती है ना, आपके नोज की जो छोटी मोटी सर्जरी या ट्रीटमेंट के लिए लोग आते हैं, उस केस में ये लोग कुछ दिन अपने पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि आप हॉस्पिटल में हमारे साथ रहें. You have a hospital also. I don't have a hospital, but I have some deal with some hospitals, and I do my operations. You have connection with yes. them. Yeah, so your patients are going to the specific hospital. Yes, for rhinoplasty surgeries, for sinusitis, for orthoplasty surgeries, we use hospitals. But the little surgeries like bichectomy, dimpleplasty, botoxes, blepharoplasties, we do in your clinic. Yeah, यानी जो बड़ी सर्जरीज होती हैं जो ये डॉक्टर साहब 2-3 बता रहे थे, उनके लिए इन्होंने हॉस्पिटल के साथ जो है कनेक्शन बनाया हुआ है. इनके पेशेंट्स हॉस्पिटल में जाते हैं, सर्जरी वहां पर ही होती है, और पेशेंट को वहां पर कुछ दिन के लिए रखा जाता है, उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है कि कहीं कोई मसला मसाइल तो नहीं है. तो डॉक्टर साहब बड़ा अपने पेशेंट के साथ 1 हफ्ता पूरा टाइम गुजारते हैं, मीन जिनकी मेन सर्जरीज की जाती हैं. अदरवाइज बोटॉक्स ये छोटी मोटा काम तो ये अपने क्लिनिक में ही कर लेते हैं. आई थिंक हम लोगों ने इनसे काफी इन्फॉर्मेशन ले ली है.
तो मैंने सोचा कि आपको ऐसे ही डॉक्टर से किसी से मिलवाया जाए जिनका काम भी अच्छा है, और अगर आप इस तरह की कोई सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप काबिल इंसान के पास आए। ऐसा ना हो कि आप किसी और के पास चले जाए और आपका काम जो नोज का या किसी का आपने काम करवाना हो ज्यादा खराब हो जाए। डॉक्टर हयाती, डू यू वांट टू ऐड समथिंग मोर फॉर आवर व्यूअर्स? If they have any questions, they always contact with us. If Yes. they have some questions, some problems, some everything, they Yes. can contact with us and we can answer all the questions. If they are in Istanbul, I always wait in my clinic them. And if they are in another countries, another cities, and from the Instagram, from WhatsApp, we can always be contact. So can you mention your Instagram? My Instagram, my name and surname, Hayati Kale. And also you have a website? Yes, my name and surname, Dr. It's simple. www.hayatikale.com. Yeah. तो अच्छी बात ये है कि इनका पूरा एक प्रोफेशनल प्रोफाइल है, सोशल मीडिया के ऊपर ये माशाल्लाह काफी एक्टिव हैं, और कुछ न्यूज चैनल्स ने भी इनको जो है इंटरव्यू के लिए बुला चुके हैं। टीवी के ऊपर भी हमारे डॉक्टर साहब अक्सर आ चुके हैं। यू आर अ सुपरस्टार ऑलरेडी डॉक्टर। No, बट थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम। इंशाल्लाह इन फ्यूचर अगर आपको भी ऐसी कोई भी ट्रीटमेंट की जरूरत हो तो आप इनसे राब्ता कर सकते हैं। इनका सोशल मीडिया भी आप चेक कीजिएगा, वेबसाइट भी चेक कीजिएगा कि इनका काम कैसा है। वहां पर होती है ना बिफोर एंड आफ्टर वाली वीडियोस, वो आप चेक करके अंदाजा लगा सकते हैं। तो बाकी अगर आपको ये वीडियो या कंटेंट अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कर देना। आप लोगों के लाइक्स बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि मैं इस तरह की मजीद वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूं। और ये यहाँ का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कल्चर है तुर्की का, ये मेडिकल टूरिज्म। इस वजह से मैंने ये वीडियो आप लोगों को बनाई है। सो थैंक यू सो मच हैविंग अस, एंड आई रियली एंजॉयड दिस इन्फॉर्मेशन, वाज वेरी यूजफुल। आई होप द पीपल हु आर वाचिंग अस दे आर आल्सो गोना लर्न टू मच अबाउट दिस। I thank you so much because your visit, and I send my loves to that patients. Thank you for your love. So this is all for today, guys. Please, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, and please, doctor, tell them to like the video. Like the video, please. Yes, like the video because doctor can make you look more younger and healthier. Of course. So thank you for watching, guys. Take care. Shore out. Bye.